हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th न्यू इंग्लिश एनसीईआरटी कावेरी की पोयम 9 गोल्ड मेडल्स के क्वेश्चन आंसर्स। इसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। आप मेरे चैनल पर जाएंगे, वहां पर एक प्लेलिस्ट है जो स्पेसिफिकली क्लास 9th के नाम से है। आपको उसमें सारा मटेरियल मिल जाएगा इस बुक का। स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोयम के क्वेश्चन आंसर्स। एज यूजुअल मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, आई जस्ट प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि शायद ये बुक नहीं है आपके पास, मार्केट में ऐसा कोई गाइड भी अवेलेबल नहीं है। मैं थोड़ा सा मेहनत करके क्वेश्चन आंसर्स बना देती हूँ। एंड लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर हियर। See, check your understandings. Work in pairs, match the words and phrases in column 1 with the meanings in column 2. You may read the poem again and infer the contextual meaning. Check your answers with your teacher. So now in column 1, we have words and phrases and their meaning are in column 2. So we have to match both of them. Let's see this. Column 1. Column 1 first is dashed in the dirt. It means destroyed. Second is stumbled, which means step awkwardly, lose balance, and almost fall. Third is staggered. It means walk or move with difficulty. Fourth is anguish, which means extreme pain or suffering. Fifth is asphalt, which means a hard black substance used to make roads and paths. So the answer is 31524. आप नोट डाउन करते चलिएगा जल्दी जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई द जिस्ट ऑफ ईच स्टैंजा, राइट द नंबर ऑफ द स्टैंजा इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि स्टैंजा क्या मतलब दे रहा है, ठीक है, कौन सा स्टैंजा क्या मतलब दे रहा है। अब आपको बताना है कि ये जो मतलब है, ये जो मीनिंग है, वो कौन से वाले स्टैंजा का है। जैसे फर्स्ट वाला है, spectators cheered participants of different events and waited enthusiastically for the final event to start. So this is for stanza 2. Second is, all runners dashed ahead as soon as they heard the gunshot. Suddenly, one of the athletes tripped and fell on the ground. So this is stanza number 4. Third is, the race finished with 9 athletes holding hands and winning the well-deserved gold medals. Their smiles and spectators standing up to applaud conveyed everything. This is stanza number 8. Then we have participants got ready at the starting line and 9 determined athletes waited for the sound of the gun. So this is stanza number 3. Then we have athletes from various parts of the country had gone through months of training, had big dreams of winning a medal. This one is stanza number 1. Sixth is the 8 athletes stopped to help the young fallen athletes stand up, forgetting that they were competing. This is stanza number 6. Then we have 9 athletes had the banner and walked hand in hand. This gesture represented the ethos of Special Olympics. This is stanza number 7. Then we have the young athlete felt his dreams were shattered and cried in pain and disappointment, but something unique happened. So this is stanza number 5. Now third question है हमारा, let us appreciate the poem. First question है इसका, two examples of alliteration from the poem are. Alliteration शायद हम जितनी बार पोएम पढ़ रहे हैं, मैं आपको बार बार उस चीज को बता रही हूँ कि अगर सेम वर्ड की साउंड रिपीट हो रही है तो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, टू एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन। फर्स्ट है स्पेक्टेटर्स स्टूड। अब आप देखो, ये स्पेक्टेटर्स भी एस वाली साउंड है और स्टूड भी एस से स्टार्ट हो रहा है। तो जब कोई सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो अगर एक लाइन में कोई एक पर्टिकुलर अल्फाबेट बार 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 रिपीट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे सेकेंड वाला देखो, बैनर्स एंड वॉक्ड हैंड इन हैंड, तो यहाँ पे एच, यहाँ पर भी एच, तो एच की साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर भी है एलिट्रेशन। चलो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ विजुअल इमेजरी फ्रॉम द पोएम। विजुअल इमेजरी का मतलब होता है कि जब आप पोएम पढ़ो और आपके सामने वो इमेज क्रिएट हो जाए, ठीक है। जैसे 3 एग्जाम्पल्स ऑफ विजुअल इमेजरी। फर्स्ट इज एथलीट्स लाइंड अप एट द स्टार्टिंग लाइन, मतलब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज फील हो रही है कि कैसे एथलीट्स जो है वो लाइन अप हो रखे होंगे। सेकेंड, वन रनर स्टम्बलिंग एंड फॉलिंग ऑन द एस्फाल्ट ट्रैक, तो मतलब कैसे वो लड़खड़ा के गिरा होगा, वो इमेज हमारे सामने क्रिएट हो गई होगी।
Third is 9 athletes walking hand in hand with banner. So this is also the example of visual imagery. Question number 3 is give an example of auditory imagery from the poem. विजुअल इमेजरी होती है जिसमें हमारी सामने वो एक तस्वीर सी बन जाती है, ठीक है। ऑडिटरी इमेजरी होती है जिसमें हम पढ़ते हुए हमारे कानों को वो चीज फील हो जाए, हमारे ईयर्स में ना वो साउंड फील हो जाए कि कैसी होगी, जैसे द साउंड ऑफ द स्टार्टर्स गन शॉट, ठीक है, द साउंड ऑफ गन शॉट। तो जैसे उसमें लिखा होगा ना गन शॉट, तो हमारे दिमाग में एकदम से वो चीज आई होगी कि कैसे क्या ऐसे वाली आवाज आई होगी। तो दैट इज ऑडिटरी इमेजरी। Now question number 4. How does the use of imagery make the poem more appealing? So answer is over here. Imagery makes the poem vivid and engaging by allowing readers to see the race, hear the gunshot and feel the anguish of the fallen runner. It helps us experience the moment as if we were present, making the message of the compassion and unity more powerful. ठीक है, आंसर मैंने लिख रखा है, इधर वीडियो पॉज करके लिख लेना आप, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। Next question number 5 is how does the poet's tone change from the beginning to the end of the poem? So यहाँ पे देखो, ये आंसर नंबर 5 है, मैंने बिगनिंग मिडल और एंड तीनों टोन्स मेंशन कर दिए। जैसे बिगनिंग टोन इज सीरियस एंड टेंस, मिडल टोन शिफ्ट्स टू सिंपैथेटिक एंड इमोशनल और एंड टोन बिकम्स अपलिफ्टिंग एंड सेलिब्रेटरी। तो बिगनिंग से लेके एंड तक कैसे कैसे टोन चेंज हुआ है मैंने तीनों मेंशन कर दिए। Question number 6 is what is the overall mood created by the poem? So overall mood है inspiring and heartwarming. Question number 7 is what is the message being conveyed by the poem? So the answer is over here. The poem conveys that true victory lies not in defeating others but in supporting one another. Compassion, empathy and unity are greater achievements than individual success. The 9 gold medals symbolize the triumph of humanity over competition. So यहाँ पर हमारे ये वाला चैप्टर का जो आपकी चेक योर अंडरस्टैंडिंग वाली क्वेश्चन आंसर्स हैं वो खत्म होते हैं। अब आते हैं अपनी मेन एक्सरसाइज पे जो है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। ये एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट आप खुद रीड कर लेना, मैं केवल आपको आंसर्स बता देती हूँ। फर्स्ट वन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द फ्रेज pulled up on their heels means that the runners, answer is B, stopped running. ठीक है, then second is mention one character trait common to all the 8 runners. So the character trait is compassion, empathy या selflessness. See, तीनों एक दूसरे के सिनोनियम है। आप compassion भी लिख सकते हो, आप empathy भी लिख सकते हो और आप selflessness भी लिख सकते हो। Next is what is the tone of the poet in this line? So the tone is admiring and respectful. Now question number 4. How might the young athlete have felt on being helped by others? So answer is over here. He would have felt grateful, relieved and encouraged, realizing he was not alone and that his dignity was restored. Question number 5 is would you consider this incident as a turning point in the poem? If yes, why? If no, why not? So the answer is over here. So I would consider it as yes, the turning point. So the answer is yes. Because the focus shifts from competition to compassion, the athlete's decision to help transforms the race into a symbol of unity and humanity, leading to unique outcome of 9 gold medals. So it is my point of view. ठीक है, मेरे को लगता है कि हाँ ये एक टर्निंग पॉइंट था। अगर आपको लगता हो टर्निंग पॉइंट नहीं था तो आप नो करके उसका रीजन बता देना। चलो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाले का फर्स्ट है हाउ डिड द 9 कंटेस्टेंट्स feel when they reached the finishing line together? So answer is they felt joyful, proud and united, experiencing a sense of shared victory and humanity. Question number second is why do you think all the 9 contestants were given gold medals? So answer is because their act of compassion and solidarity was greater than individual competition. They showed that true success lies in helping each other. Now question number 3. Complete the sentence appropriately. The holding of hands signifies a feeling of unity, brotherhood and togetherness. Question number 4. Choose the correct option to complete the sentence.
The spectators giving a standing ovation indicates that they were what? They were amazed. ठीक है? And question number 5 is explain the last line of the extract. So the last line means that the athlete's gesture of compassion and unity conveyed a powerful message beyond what words could express. Their actions spoke louder than any description, leaving a lasting impact on everyone present. So यहाँ पर आपके दोनों extract based questions खत्म होते हैं. अब चलते हैं अपने मेन आंसर द फॉलोइंग की तरफ. हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं. 7 के 7 क्वेश्चंस के आंसर्स मैं प्रोवाइड करती हूँ आपको. ओके, चलिए मिलते हैं आपको यहाँ पर. ओके, सॉरी. So first question. See, first question is, एक second रुकिए बस. Okay. First question we have, describe how the setting established in the first two stanza of the poem create a vivid atmosphere for the events that follow. So answer is, the first two stanzas describe athletes gathering from different parts of the country after months of training and spectators cheering eagerly for the final race. This builds anticipation, excitement, and tension, creating a lively atmosphere that makes the later incident more dramatic and memorable. Now, question number second. How do you think the youngest athlete might have felt when he fell? So answer is, he likely felt shattered, disappointed, and anguished as his dreams of winning seemed destroyed. He also felt embarrassed and hopeless until the others came to help. Now question number 3. Why were the athletes eager to begin the race? So answer is, they were eager because they had trained for months, carried big dreams of winning medals, and wanted to prove themselves in front of the spectators. Now question number 4. What does the transformation of the 100-yard dash to a walk symbolize? Answer is, it symbolizes unity, compassion, and shared humanity. The race stopped being about a competition and became a walk of solidarity, showing that helping one another is more important than winning alone. Now moving towards our fifth questions. I hope यहाँ तक आपको क्वेश्चन आंसर्स दिखाई दे रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे. बहुत छोटे छोटे आंसर्स में लिखती हूँ, टू द पॉइंट ही आंसर्स में लिखती हूँ. ठीक है. सो फिफ्थ वन. How might the poem be different if the focus was solely on individual achievement rather than collective support? So answer is, if the focus was only on individual achievement, the poem would have ended with one winner and 8 losers. It would lack the emotional depth, moral lesson, and inspiring message of empathy that makes it unique. Now question number 6. How does the poet's use of language and tone enhance the reader's engagement with the poem? So answer is, David Roth uses simple, direct language, vivid imagery, and a shift in tone from tense and competitive at the start to compassionate and celebratory at the end. This change keeps readers engaged with and emotionally invested. And the last question is, what might be the poet's purpose of writing this poem? So the answer is, the poet's purpose is to show that true victory lies in compassion, empathy, and unity rather than competition. He highlights the spirit of the Special Olympics where human values matter more than medals. So ये हैं आपके 7 आंसर द फॉलोइंग. यहाँ पे 7 है, हमने वहाँ पर इसके आंसर्स कर लिए. चलते हैं अपने वोकैबुलरी की तरफ, वोकैबुलरी वाले एक्सरसाइज की तरफ. So question is, complete the table given below by writing 4 nouns in column 2 that collocate with the adjective in column 1. One example has been done for you. You may take the help from dictionary. अब collocation का मतलब क्या होता है? Collocation is a pair or group of words that habitually appear together. मतलब ऐसे words जो हम लोग usually साथ में ही बोलते हैं, ठीक है, वो होते हैं collocation. जैसे स्टैंडिंग ओवेशन, हम हमेशा बोलते हैं ना स्टैंडिंग ओवेशन मिला है उसको. तो ये दो वर्ड्स एक साथ ही बोले जाते हैं. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव नाउन. ठीक है. तो यहाँ पर अब आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं कॉलम 1 में एडजेक्टिव है, आपको वो 4 वर्ड्स बताने हैं जो इसके साथ बोले जाते हैं. जैसे एग्जाम्पल पे
बिग, हम बिग के साथ क्या बोलते हैं? बिग डिसअपॉइंटमेंट, बिग फेलियर, बिग सरप्राइज, बिग डिसीजन। सिमिलरली आपको बाकियों के बताने। सो दिस इज जैसे हैवी बर्डन, heavy rain, heavy traffic, heavy loss. So the four words are burden, rain, traffic, loss. Next is third one is strong. हम बोलते हैं ना strong belief, है ना? I am having a strong feeling. I had a strong argument. The wind is strong wind, है ना? So strong belief. तो यहाँ पर आ जाएगा belief, feeling, argument and wind. Similarly for the large हम लोग लिखते हैं crowd, number, amount और family. Large हमेशा in words के साथ use होता है. Fifth है great. So great adjective is used with great achievement, great effort, great joy, great importance. ठीक है? So यहाँ पर ये वाला हो गया, collocation वाला हो गया हमारा. Now question number 3 is choose the correct adjective from those given in the box for the underlined words given in the sentences below. Ensure you do not use the same adjective twice. So first is the littlest athlete was moving at a steady pace. Littlest कुछ नहीं होता, छोटे को हम youngest बोलते हैं. ठीक है? Okay. Second is the 8 athletes had a smiling attitude. Smiling attitude नहीं होता है, positive attitude होता है. When the athlete fell, he gave a huge cry of pain. Huge नहीं, चिल्ला के बोला है वो, loud cry of pain. Third is the spectators saw a terrible difference in the athletes who had only come to compete. It is not terrible, it is significant. The gaudy crowd cheered to runners enthusiastically. नहीं, noisy crowd था, ठीक है, बहुत शोर मच रहा था वहाँ पे. और यहाँ पर हमारा सारे क्वेश्चन आंसर्स और बैक एक्सरसाइजेस सारी खत्म होती हैं इस वाली पोएम की. देन वी हैव स्पीकिंग एक्टिविटी. स्पीकिंग एक्टिविटी तो मैं करा नहीं सकती हूँ आपको, मैं आपसे बात तो कर नहीं सकती हूँ. देन वी हैव राइटिंग टास्क जिसमें आपको स्लोगन राइटिंग करनी है. एक स्लोगन आपको गिवन है, कैसे लिखते हैं, क्या चीज़ करते हैं वो बता रखा है. And that's it. We don't have anything learning beyond the test. ये भी हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमें इसमें कुछ करना नहीं है. Then we have some information. ये भी जब आपके पास बुक आएगी ये सारी चीज़ें तो आप खुद से पढ़ भी सकते हैं. ठीक है? Next we have the another chapter which is twin melodies. So यहाँ पर हमारी सारी की सारी 9 गोल्ड मेडल्स की एक्सरसाइजेस खत्म होती हैं. आई होप आपको आंसर्स अच्छे लग रहे होंगे. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि मैं हर किसी की कमेंट का रिप्लाई करती हूँ. ठीक है? एंड आई जस्ट वांट कि आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को जितना हो सके शेयर करिए, अपने टीचर्स को बताइए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास, टीचर्स के पास अभी तक बुक्स भी अवेलेबल नहीं है. सो अगर आपकी पढ़ाई ना, आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई ना रुके, आप कंटिन्यू करते रहें सारी की सारी चीज़ें, कोई बुक ना अवेलेबल होने की वजह से आपको दिक्कत ना आए, तो मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. ठीक है? और मिलते हैं कल ट्विन मेलोडीज़ के क्वेश्चन आंसर्स के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.